Hi friends, in this session we'll discuss about how to solve analytical problem. Basically this is organic problem. But why it is entitled as analytical problem? Just because here in case आपको given data दिए होंगे, कुछ टेस्ट दिए होंगे. टेस्ट का मतलब केमिस्ट्री लैब में जो आप टेस्ट कर सको ऐसे टेस्ट. कुछ हिंट्स दी होगी और आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड आउट करना है. That is called analytical based problem. Basically it's look like you are given a A. Then on arrow some reaction that is called as B. On arrow some reaction you have to C. On arrow some reaction you have to find out E. तो A to E सारे के सारे आपको ढूंढने हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं. यू कैन क्लियरली से ऑन अ बोर्ड कि बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. तो कुछ आज हम 5 या 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिटिकल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो प्रॉब्लम नंबर 1 का स्टेटमेंट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% ऑफ कार्बन, 11.63% of hydrogen and rest is oxygen. See, this given data is based on empirical formula, molecular formula. So first जो लाइन दी हुई है उसके ऊपर से आपको एक empirical formula ढूंढ लेना है और उसके बाद उसका molecular mass दिया हुआ है. तो molar mass of compound is 86. अब यहां से आपको हिंट्स देना स्टार्ट किया हुआ है. देखिए फर्स्ट हिंट क्या दी हुई है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide and gives a positive iodoform test. On vigorous oxidation, it gives ethanoic and propanoic acid. Deduce the possible structure of organic compound. So basically, in this given data, first you have to find out the molecular formula of the component. एंड देन उसके बेस के ऊपर से आपको अज्यूम करना है कि ये कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है. मीन्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कौन कौन देगा वो हमें डिस्कस करना है. देन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड टॉलरेंस नहीं दे रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट. लेट्स स्टार्ट द सॉल्व द प्रॉब्लम. So according to data you are given a carbon, hydrogen and oxygen whose atomic weight is 12, 1 and 16. Given percentage is 69.77, 11.63, 18.60. So first step, इसको उसके atomic weight से divide कीजिए. It's simple. Hope you understand this 11 concept, empirical formula, molecular formula. So you get rough ratio. Whatever the smallest value of this rough ratio, पूरे column को इससे divide करो. So this divided by 1.16, 11.63 divided by 1.16 and this divided by 1.16. So you get 5, 10 and 1. 5 means 5 carbon, 10 hydrogen and 1 oxygen. So empirical formula of organic compound is C5H10O. तो वहाँ पे formula क्या use किया था? EFN is equal to molecular weight. Empirical formula means 86, N is equal to 86, N is equal to 1. So empirical formula बोलो या molecular formula बोलो, it becomes C5H10O. So हमारा first step clear हो गया. Your empirical formula or you can say the molecular formula is C5H10O. So next, according to hint आपको क्या क्या दिया हुआ है वो assume करते हैं. Addition reaction with NaHSO3. NaHSO3 का हमने reaction देखा था aldehyde. Aldehyde basically carbonyl compound this gives. तो means it may have CO group. Iodoform test. अब आयोडोफॉर्म टेस्ट खाली दो ही फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं. 1 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज CH3 CHOH. अब यहाँ पे हम क्लियरली बता रहे हैं दिस ओनली ए कीटोनिक कंपाउंड. तो ये नहीं हो सकता है हमारा. ओनली दिस फैमिली मेंबर कैन गिव्स दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट. एंड लास्ट इट डज नॉट गिव्स द टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट. टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट अल्डिहाइड देता है. तो यहाँ पे हमने दिया हुआ कंपोनेंट है वो कीटोन होगा, अल्डिहाइड नहीं होगा. Why? Because iodoform test कीटोन दे रहा है, NHSO3 ग्रुप कीटोन दे रहा है एंड टॉलेंस रिएजेंट नेगेटिव दिखा रहा है. सो बेसिकली फर्स्ट हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है. अब हमें ढूंढना है साइड चेन. साइड चेन कैसा होगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? C5H10O. अब ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें से माइनस कर लीजिए C2H3O. So जो अगर इसमें से हम माइनस करेंगे what is left in this side? That is C3H7 and C3H7 is nothing but propane. So our component is CH3 CH2 CH2 COCH3 and last line में
आपको एक और हिंट दी थी, व्हेन दिस कंपोनेंट ऑन ऑक्सीडेशन, वीगरस ऑक्सीडेशन, यू गेट प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड. सो देखिए, अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, OH यहाँ पे मिलेगा, OH यहाँ पे भी मिलेगा. सो वन OH is here, one OH is here. So this becomes CH3COOH, that is your component, and this becomes CH3CH2CH2OH. And CH2OH का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो जहाँ जहाँ CH2OH वहाँ वहाँ COOH. So you get two major product, CH3CH2COOH plus CH3COOH. So this is all about your numerical. Numerical का final answer होगा, your answer is organic compound having formula CH3, CH2, CH2, CO, CH3, whose molecular weight is 86. You can count and recheck also. So this is all about your first answer. So second problem, a compound A whose molecular formula is C2H6O on oxidation with PCC gives B, which on treatment with aqueous alkali and subsequent heating gives C. Now B on oxidation with KMnO4 forms a monobasic carboxylic acid with molar mass is 60 gram. Deduce the structure ABC. Fine. So let's start with the numerical number 2. आप आराम से दो बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, then we start the session. So in the given data, you are given a compound A whose molecular formula is C2H6O. On oxidation with PCC, you get structure B. Now B on treatment with aqueous alkali, that is aqueous NaOH, subsequent heating, you get C. And on B on oxidation, you get carboxylic acid whose molecular weight is 60. This is your given data. So we'll start with C2H6O. देखो यहाँ पे सबसे पहली हिंट PCC यूज कर रहे हैं, तो हमने PCC का रिएक्शन देखा था. PCC का प्रीकर्सर मींस रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल, एंड PCC ऑलवेज यूजेज एल्डिहाइड. तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए यहाँ पे चाहिए CH3CH2O, तभी ये C2H6O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट होगा. यहाँ पे CH3CO CH3 भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट कीटोन डज नॉट अंडरगोस PCC रिएक्शन. वो एक चीज है. शायद आप बोलोगे सर C2H6O, तो कीटोन भी हो सकता है CH3CO CH3, तो वो C3H6O हो जाएगा, C2 नहीं होगा. So that's why CH3CH2OH on PCC you get acetaldehyde. Now acetaldehyde on aqueous NaOH means aldol condensation reaction. We get CH3CHOH CH2CHO. ऐसे दो मोल लेके आपको सिंपल aldol करना है, that you are aware about it, and subsequently it's heated means OH from here, H from here, water molecule is released, and what is left in this side, CH3 CH double bond CH CHO, that is your C part. B on heating or oxidation, that is KMnO4, you get 60 molar mass is acetic acid. तो that is जहाँ जहाँ CHO वहाँ वहाँ COOH, that is nothing but acetic acid whose molecular weight is 60. So what is A, B, C and D? तो let's assume D. आपको A, B, C बताया, but मैंने इसको D बता दिया. तो what is A, B, C and D? तो A था आपका CH3CH2OH, that is ethanol, that is this. अब इसका PCC किया हमें मिला B. B क्या है, CH3CHO, that is nothing but ethanol. This on aldol followed by subsequent heating you get C. C means aldol का final product, that is nothing but but-2-in-1-al. So that is your C, but-2-in-1-al. And D, a carboxylic acid whose molecular weight is 60, that is nothing but acetic acid. So likewise you have to write down A, B, C, D, and then you get, I think, 4 out of 4 or 5 out of 5 marks. So this is all about your second numerical. Let's move on to this third one. So third problem, an organic compound A on treatment with acetic acid in the presence of sulfuric acid and produce an ester. अब देखिए पहली ही चीज के अंदर हिंट देती हुई है. Organic compound A treatment with acetic acid means acid plus alcohol you get ester. So your compound A definitely alcohol. Alcohol and acid you get B component, that is ester. Now A on mild oxidation
gives C with 50% KOH followed by acidifying HCl, you generate A and D. मीन्स आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, जो इसमें से एक होगा A जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है और दूसरा मिलेगा D. Now D with PCl5 followed by reaction with ammonia, you get E. देखिए एक ही रिएक्शन पे दो कंडीशन अप्लाई की हुई है, पहले PCl5 भी करना है मीन्स क्लोरीनेशन होगा और उसके बाद उसका अमोनोलिसिस भी होगा, देन यू गेट E. E on dehydration and produce हाइड्रोसाइनिक एसिड मीन्स E का हम डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे तो हमें हाइड्रोसाइनिक एसिड मिलेगा. आइडेंटिफाई ABCDE, 5 चीज ढूंढनी है, 5 मार्क मिलेंगे. So read the statement, we start the solution. So according to statement, component A should be alcohol. Why? Because when alcohol is treated with acid, you get ester. So this is methanol. On treatment with acetic acid, you get CH3COOCH3. This on mild oxidation, इसका mild oxidation करोगे तो हमें क्या मिलेगा? HCHO. And on HCHO, that is our C. On treatment with 50% KOH and dilute HCl. अब most important चीज, sir, how can you get our starting material is methanol only? इथेनॉल भी हो सकता था, प्रोपेनॉल भी हो सकता था, या फिर कोई भी अल्कोहल, बेंजीन का भी कुछ अल्कोहल हो सकता था. यस और नो? बट स्टूडेंट यहाँ पे हिंट दी हुई है 50% KOH मीन्स कैनिज़ारो रिएक्शन. Now अगर कैनिज़ारो रिएक्शन है तो कैनिज़ारो रिएक्शन only and only given by 2 component. One is formaldehyde, second is benzaldehyde. So our starting material should be only and only methanol, not ethanol, propanol or butanol. So once again we start with our first one. A is methanol. When methanol is treated with acetic acid, you get ester. Methanol on mild oxidation, you get HCHO, that is nothing but formaldehyde. Most important, when formaldehyde treated with 50% KOH and dilute HCl followed by hydrolysis, तो KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैनिज़ारो रिएक्शन. So कैनिज़ारो will leads to give you HCOOH and CH2H. देखिए आपका एक कंपोनेंट A फिर से वापस मिल गया and दूसरा मिला HCOOH. One is acid, another is alcohol. This alcohol is already our starting material. So this HCOOH on treated with PCl5 and ammonia, तो HCOOH when treated with PCl5 तो first क्या होगा? यहाँ से OH चला जाएगा and you get Cl, and next when ammonolysis होगा तो Cl replaced by NH2 तो you get HCONH2. Now last step, when HCONH2 undergoes dehydration, dehydration means water molecules released. What do you get? HCN, that is hydrocyanic acid. H2 from here, O from here, H2 निकल जाएगा, you get HCN, that is hydrocyanic acid. So likewise you get A2E. Our component A is methanol. Undergoes reaction with acetic acid, you get B, that is nothing but ester, that is methyl acetate. Now A on mild oxidation, you get C. C is nothing but HCHO, that is methanol or formaldehyde भी common name भी लिख सकते हो. 50% KOH dilute HCl. Once again you get A and D. A तो फिर से methanol हो जाएगा, D क्या मिला मुझे? HCOOH, that is methanoic acid or formic acid. Now this undergoes PCl5 followed by ammonolysis. You get HCONH2, that is nothing but methanamide. Methanamide undergoes hydrolysis, means water molecules release dehydration. You get HCN, that is hydrocyanic acid. So this is all about your A to E. Likewise you have to solve this numerical. ऐसे बहुत सारे analytical based questions सिलेबस में है और आपके एंड एक्सरसाइज के अंदर भी आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट at least 2 to 3 sessions will discuss continuation of analytical based question. So this is all about your today's session. Thank you.